Okay, Assalamu alaikum all. Welcome to conversations with our former and current PhD students. हमारे पास एक stellar किस्म का panel है जहाँ पर we have Aksa, we have Wasim, we have Salar and we have Javeria. And I hope कि जो PhD applicants हैं जो सोच रहे हैं हमने अप्लाई करना है या जो कर चुके हुए हैं उनके लिए इस सेशन के अंदर यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी. सो लेट मी बिगिन इंट्रोड्यूसिंग आवर पैनल. सो वी हैव डॉक्टर अक्सा नईम. हमारी माशाल्लाह से स्टेलर एलुमनाई हैं. इन्होंने लम्स से मास्टर्स किया है और पीएचडी की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर. और अब इस वक्त शी इज एट द डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी साइंसेस एंड इंजीनियरिंग एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. और इनकी जो एडवाइजर हैं डॉक्टर सैली बेंसन, she was in the advisory committee of Biden in US. So एक बहुत तगड़े ग्रुप के अंदर डॉक्टर अक्सा काम कर रही हैं और पिछले 4 साल से काम कर रही हैं. And she's doing some really good work there. So thank you Aksa for joining us. Then we have Dr. Wasim. Dr. Wasim जो हैं, he has bachelor's in electrical engineering from GK और मास्टर्स और पीएचडी दोनों लम से हैं. और रिसेंटली ही स्टार्टेड हिज पोस्टडॉक एट मार्केट यूनिवर्सिटी इन यूएस. और ये काम कर रहे हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग एरिया के अंदर, कपल्ड ह्यूमन नेचर सिस्टम्स. हम उनसे पूछेंगे वो क्या काम कर रहे हैं, हाउ कैसे लम्स ने उनको प्रिपेयर किया है. देन वी हैव आवर करंट स्टूडेंट्स जो लम्स के अंदर हैं. वी हैव जवेरिया जो कि इस वक्त 4th ईयर पीएचडी स्टूडेंट हैं. शी हैज बीएस इन एमएस फ्रॉम यूईटी लाहौर. और यहाँ पे लम्स आने से पहले शी वाज लेक्चरर एट एनएफसी यूनिवर्सिटी एट मुल्तान. और इसके बाद है हमारे पास सालार खान. ही हैज बीएस फ्रॉम यूईटी लाहौर और इनकी मास्टर्स है ओबर्न यूनिवर्सिटी यूएस से. और इनके पास एमबीए की भी डिग्री है, वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ये एडजंक्ट फैकल्टी भी हैं हमारे ह्यूमैनिटीज स्कूल के अंदर. सो बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं. एंड ही लव्स टू प्ले फुटबॉल. सो आई एम श्योर वी विल हियर some good things about LUMS campus life here. So welcome all of you in this conversation. So Aksa, मैं आपसे let me start with you. You are at a top group of this world like Stanford University, energy systems में काम कर रही हैं. How did the program at LUMS prepared you for this kind of career जहां पर आप बहुत ज़्यादा जबरदस्त लोगों के साथ काम कर रही हैं? So tell us about this. Assalamu alaikum. Thank you for having me here today. मैं इधर पहुंची कैसे और किस तरह से इनिशिएट हुआ सारा प्रोसेस. I owe LUMS a lot, and I could not be here if it weren't for LUMS. So it all started when I joined PhD I joined LUMS for PhD, but I was already a student at LUMS and I was doing MS, and my advisor asked me to apply for PhD. And it wasn't a planned decision, but then it felt very natural to me to go continue studying at LUMS because I was kind of already familiar with the faculty and the curriculum that was being taught at LUMS. And I think there are 3 major aspects that helped me prepare for my career at Stanford. And it starts with the kind of the teaching practices that are being carried out at SSE, especially in not just in WE department. I'm talking about all the faculties and all the departments. So we have a wide variety of like people from all over the world. Our faculty is very diverse, and they adopt diverse practices in teaching, not just the board-based traditional methods, but also they leverage other tools like they have their seminar-based courses at LUMS, and they are
project-based courses where students and where each module in the class is designed to help the student do their work in the final project. So I think that there are lots of things that prepared me for this kind of work. When I graduated from LUMS after my PhD, it didn't feel like that there was a need for me to go through some additional training before I joined Stanford. It felt very like the process was very smooth. I didn't felt misfit at Stanford. So I think that alums had a lot of part to play in that. And a second important thing is the research. I think that I admire alums faculty a lot because it might not be known to many people, but they have very strict policies regarding research. They don't focus on the quantity of publications. They focus on the quality of publications. And this is one of the things that helped me prepare. So even at Stanford, Stanford has even more stringent conditions on the publications. They don't like, it's not just, can't just publish anything at anywhere. You Yeah. have to have some quality research done, and you have to go through multiple reviews. And this practice was being carried at LUMS as well. So there was like, I see a lot of common things. Not and the LUMS was already following a lot of things that are being followed at Stanford. So it was not a major jump. It didn't feel like a major jump to me when I came here. And also because Sally Benson was also already part of LUMS, and she was already familiar with how things were being carried out there. So it felt like really she made things very easy for me to get adjusted at Stanford. Um, so that's how, and I would also like to mention one more thing that I think it's very important, like, and people need to know that. The third important thing is in development of interpersonal skills. I'm still working on that, but I think it's communication is a very important part of any research. You could have done a lot, you could have made very big discoveries, and you could have put in a lot of effort in your work. But if you're not able to communicate your work to other people, in writing or otherwise, then there's no way that people are going to know what you have done. So in order to get recognition, you need to be able to communicate effectively. And I think LUMS prepared me for that. There were not just work opportunities for conferences, participation in conferences, workshops, but also in the weekly presentations that people used to avoid. And I think that it's a very important aspect that people tend to ignore. But I think it really helped me because in order to be known or recognized for your work, you have to know how to present your work. And that's how I got into Stanford as well, because I Great. was presenting my research. Yeah, so it was during the annual poster presentation, and Sally Benson found me my like she came to my poster. I was presenting my research. She saw my poster. She learned about my work, and then she offered me postdoc opportunity. It was that easy. Oh, wow. I mean, so I mean this thing has to be highlighted, and Yeah, I've ये been to story so तो मुझे many. भी नहीं पता थी. So Yeah, our poster session yeah, it's very is important. People are looking for people are looking to recruit their students and postdocs at conferences and at poster competitions. I think we don't give that much importance to posters. Like even if I am 100% sure that if I were at LUMS and if I were given an opportunity to present a paper without getting it published, and I might have not gone for it, because I was think that what's the point of presenting a poster if you're not going to get it published somewhere? But it's great. not like that. In the US, it's totally opposite. And it was the same at LUMS as well, because we were forced to present the posters in the poster session in the annual meeting for like the advisory board meeting. We had to Yeah. present. It was a requirement.
And some people did it happily, while others were not that enthusiastic about it. But it really matters a lot. You need to like it has to be there has to be much focus on like people need to focus on their participation. It helps a lot. Zabardast, mashallah. So you told us some very good things. So agar main capture करूँ, so we can say that maybe you went from Stanford of Pakistan to Stanford of US. That's correct. That would be Okay, correct. great. Yeah. So thank you. So Wasim, आप हैं, आपकी वीडियो मुझे नजर नहीं आ रही. I think you are still okay. Yeah. Okay. सॉरी, मैं वीडियो डेलिबरेटली मैंने ऑफ कोई किया. बात नहीं, मुझे कोई लगता बात है नहीं. कि So इंटरनेट कोई बात नहीं. प्रॉब्लम So है. moving to you, जी. before I move to Wasim, जो participants हैं, they can send their questions. अगर उन्होंने किसी से कोई question पूछना है, तो वो via text, via chat, they can send a question, and I will ask our panelist अगर आपका कोई सवाल होगा पूछने के लिए. So Wasim, moving to you, you are a fairly recent graduate of LUMS EE program. And you recently started your postdoc at Marquette University, Wisconsin, USA. How was your experience at LUMS? कैसे आपको LUMS ने prepare किया to go to this kind of leading group in this human coupled nature systems के अंदर? अपना बताएं experience थोड़ा सा. जी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. मैंने एक्चुअली मास्टर स्टार्ट किया था लम्स में, और मास्टर के दौरान ही आई रियलाइज के मेरी जो डायरेक्शन बन रही है वो शायद मल्टी डिसिप्लिनरी है, और मुझे इसी डायरेक्शन में काम करना है. लेकिन मैंने एक्चुअली पीएचडी लम्स से की क्यों, अगर मैं इस बात का आपको जवाब दूं तो जब मैं मास्टर कर रहा था तो यहाँ पे पहली चीज जो मैंने नोट की वो तो शायद बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है हमारा रिसर्च का, डबल में स्पेशली, जो कि अगर ये मेरी बात जो पीएचडी स्टूडेंट आने वाले हैं वो सुन रहे हैं तो ये गारंटी है कि आप किसी भी सेक्टर के साथ, किसी भी सुपरवाइजर के साथ आएंगे तो आप जो भी काम करेंगे वो दुनिया के आप किसी भी कोने में प्रेजेंट करेंगे तो वो कोई काम अच्छा ही होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ यानी मीडियोकर लेवल की रिसर्च नहीं होती डबल ई में. मुझे और दूसरी चीज जो फैकल्टी है वो काफी रीचेबल है मेरे ख्याल में. ऐसा हर जगह पे नहीं होता. मैंने 7 साल लम्स में स्पेंड किए हैं, और इस दौरान मुझे पर्सनल लेवल से लेकर रिसर्च का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात डिस्कस करनी है, किसी भी फैकल्टी मेंबर से डिस्कस करनी है तो बहुत इजीली रीचेबल है. इन चीज़ों ने मुझे काफ़ी की वजह से मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुआ और मैंने पीएचडी का प्रोग्राम ज्वाइन किया. एंड वंस आई ज्वाइन, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे इस प्रोग्राम के दौरान मिली. जैसा कि मैं जर्मनी में एज अ पीएचडी स्कॉलर गया कुछ हफ्ते के लिए. मैं यूएस में बोस्टन यूनिवर्सिटी में 6 महीने के लिए आया, वो भी मुझे लम्स की तरफ से ही काइंड ऑफ सपोर्ट मिली. मैं नेदरलैंड में प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गया, उसकी सपोर्ट भी मुझे लम्स की तरफ से मिली. और मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों ने मिलके और जो सबसे बड़ी बात लम्स में जो रिसर्च मैं कर रहा था उसने मुझे प्रिपेयर किया जो मेरी आने वाली पोजीशन थी उसके लिए. और इन सब चीज़ों ने मिला के मैं जो अभी मेरे पास स्किल्स हैं, मैं कंपेयर करूं कि मैं जब पीएचडी प्रोग्राम में आ रहा था तो उस टाइम तो मुझे शायद एक पैराग्राफ ही लिखना नहीं आता था, टू बी ऑनेस्ट. और मुझे अपना काम प्रेजेंट नहीं करना आता था बिल्कुल भी. और अभी मुझे यहाँ पे ना सिर्फ यहाँ लोग मुझे ना सिर्फ मेरी प्रेजेंटेशन से मुझे अप्रिशिएट करते हैं
बल्कि वो कहते हैं कि ये इवन मेरे यहाँ पे सुपरवाइजर ने मुझे कहा कि मैं अभी तक ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता, आपने कहाँ से सीखी है? तो ये सारी चीजें मैंने लम्स से सीखी है, मैंने लम्स की फैकल्टी से सीखी है, ये मैंने अपने सुपरवाइजर से सीखी है लम्स में। ऐसा नहीं है कि मैं पीएचडी से पहले ये चीजें सीख के बैठा था, ये मैंने पीएचडी में ही सीखी है। और मेरे ख्याल में जो सारा लम्स का एक्सपीरियंस है, लम्स के कोर्सेज, बाय द वे मैं डबल ई से हूँ, आपके लिए हैरानी की बात होगी कि मैंने बायो बायोलॉजी के कोर्सेज लिए हैं यहाँ पे। मैंने इकोनॉमिक्स के कोर्सेज ऑडिट किए हैं, मैंने बिजनेस स्कूल से कोर्सेज लिए हैं। तो ये भी एक पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल में एक फर्क है लम्स से, अगर वो आए तो, कि वो कुछ भी कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। और ये सारी चीजें मिला के हमें प्रिपेयर जबरदस्त। करती हैं अपनी अगली पोजीशन के सो लिए। आप जी ये जो बातें बता रहे हैं ना, आई डोंट नो, मुझे इकबाल का जी। एक शेर याद आ रहा है जो मैं बेशक आपके लिए कहूंगा। हम्म, वो शेर नहीं ना हम्म, उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। आई एम श्योर आपके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे जो कि पॉलिश हुए हैं लम्स के अंदर, एंड यू आर डूइंग some great things after graduation. So अगर मैं इन्हें नटशेल कहूँ कि हम्म, हम ये कह सकते हैं कि यू एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट एट लम्स, यानी कि हम लोग सिर्फ हम्म, वो जो है ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर नहीं बैठे हुए, वी डू अ लॉट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी स्टफ और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, और साथ में एग्जैक्टली आपको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है व्हाइल अ स्टूडेंट एट लम्स इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल। एग्जैक्टली। जैसा कि सिर्फ मेरी एग्जांपल नहीं है, मैं और भी पीएचडी स्टूडेंट्स, डबल ई के पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जैसे डॉक्टर अंतर है, उन्होंने फूड एनर्जी नेक्सस पे काम किया है, जो कि जो अपेरेंटली नहीं लगता कि एक डबल ई का स्टूडेंट कर सकता है। फिर डॉक्टर तला मंजूर है, उन्होंने सोशल या इकोलॉजिकल सिस्टम पे काम किया है। तो बिल्कुल। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे डबल ई के अंदर हैं, जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और दुनिया के अच्छी अच्छी जगहों पे अपना काम प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना काम छाप रहे हैं नेचर में, और यू नेम इट, मतलब हर जगह पे हमारा काम है डबल ई के लोगों का। जबरदस्त। और डिफरेंट टाइप के जर्नल्स में छाप रहे हैं। और अगर मैं सादा अल्फाज में बताऊं कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लम्स में क्या किया है, तो मेरा काम, मैंने प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके कपल्ड ह्यूमन नेचुरल सिस्टम में उसको यूज किया, और अगर उसमें मजीद फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन करूँ तो मैंने वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड है मेरी सारी रिसर्च लम्स में। और ये मैंने सारा काम डबल ई में बैठ के किया है। तो कोई भी पीएचडी स्टूडेंट है जो कि आ रहा है और उसके दिमाग में कुछ आइडिया है, वो कुछ भी करना चाहता है, तो आई थिंक कि डबल ई के जो कोर्सेज हैं, रोबोटिक्स है, जो भी है, पावर सिस्टम है, एम्बेडेड सिस्टम है, वो सारे कोर्सेज में वो सारी चीजें मौजूद हैं, जो वो उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके वो इंजीनियरिंग के किसी भी फील्ड में अप्लाई करके ठीक है। रिसर्च कर सकता है मेरे ख्याल जबरदस्त वसीम, जबरदस्त वसीम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर थॉट्स। अभी मैं आपके पास वापस आऊंगा। अच्छा, में। लेट मी नाउ गो टू जवेरिया। जवेरिया, आप हमारी इस वक्त फोर्थ ईयर स्टूडेंट हैं, एंड आई नो यू आर मैरिड एंड यू हैव टू किड्स, एंड यहाँ पर आप जबरदस्त किस्म का एक्सपेरिमेंटल काम भी कर रही हैं, सिमुलेशन भी कर रही हैं। आई एम श्योर बहुत सारे एप्लीकेंट्स होंगे जो मैरिड होंगे, शायद जिनके किड्स भी हों, एंड दे माइट बी थिंकिंग कि पता नहीं हम लम्स से कैसे अपने पीएचडी को मैनेज करेंगे। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन योर एंड, और आप कैसे अपनी पर्सनल और रिसर्च लाइफ को बैलेंस कर रही हैं, और लम्स कैसे फैसिलिटेट करता है आपको। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सर, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि डिसीजन जो था फॉर पीएचडी, स्टार्टिंग पीएचडी, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट विद किड्स। लेकिन एज आई हैव गॉन थ्रू द लम्स फैसिलिटीज और सारा कुछ मैंने देखा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैसिलिटी फॉर अ मदर जो थी, वो थी डे केयर फैसिलिटी फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, तो मैं आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय पीएचडी, और भी बहुत सारी चीजें थी, एज लम्स एक्सेल्स इन रिसर्च एंड
teaching. तो पाकिस्तान में I think it was the best option. और secondly के fully funded, it was a fully funded PhD program. So I decided to start the PhD here from here. और अभी तक ये है कि मेरा experience it is very good. कि आप जो है ना अपने आपके जो बच्चे हैं वो आराम से डे केयर जाते हैं and they are settled there. और आप अपना काम आराम से कर सकते हैं, अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क भी इवन जो मैंने कोर्स वर्क और सारा वो किया और वो इसी बेसिस पे किया ऑफ कोर्स के लम्स जो है ये फैसिलिटी देता है. अदरवाइज ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए कि मैं स्टार्ट करती PhD प्रोग्राम. तो और रिगरस कोर्स वर्क जो यहाँ पर है और जो टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं. कि अगर सपोज जो आपके सुपरवाइजर है अगर वो उनको आइडिया है कि आप मैरिड हैं और सारा आप मैनेज कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. तो ये सारा कुछ है यहाँ पे. सो बल्कि मैंने तो लम्स के डे केयर के मतलब ये भी सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट भी हो गए हैं एंड दे स्टिल हैव द फैसिलिटी टू हाँ यूज जी, द डे alumni केयर. के लिए भी ऑफ कोर्स द Alumni. फैसिलिटी इज आल्सो फॉर alumni और वो भी अवेल कर सकते हैं ये फैसिलिटी. और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि PhD स्टूडेंट्स के लिए MS स्टूडेंट्स के लिए भी है. दिस इज द सेम फैसिलिटी जो कि बाकी एम्प्लॉयज के लिए है. So you are I am successfully balancing your personal it's and difficult, research. it's very difficult to balance everything, but of course you have to come out of your comfort zone for achieving anything, and it's never too late to achieve your dreams, I can say. चलिए जबरदस्त. थैंक यू. सो सलार के पास मैं बात हूँ. सलार, you did your masters from US from Auburn University. और इसके बाद आप you are doing your PhD at LUMS. क्या कंपेयर करते हैं आप? यूएस के अंदर आपने मास्टर्स किया, यहाँ पर PhD कर रहे हैं. व्हाट इज द कंपैरिजन? क्या कोई पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अगर ये सोचें कि मैं यहाँ PhD कर रहा हूँ, so am I worse than the people who are doing PhD at US or what? क्या थॉट्स हैं आपके? आपके पास दोनों डोमेन्स का एक्सपीरियंस मौजूद है. Good. First of all, thank you for having me here, sir. Very important question. Absolutely. This is the kind of question I also think to myself too. Yes, this is an important comparison. This is a thought process a potential PhD student might be thinking about. Yeah, people who might be wondering, okay, how does life compare in terms of graduate studies abroad and here in Pakistan? They can be different answers if you are in a different university in Pakistan. But if you are in LUMS, I can very, very easily say this. You are pretty much experiencing academically the same things that you might experience abroad. In terms of how the academic program is structured, it is pretty much modeled on the US graduate programs. So it's very comparable. It's pretty much there. And the best thing about it is you get access to world-class faculty here at LUMS too. So then there's not too much of a difference between what's happening here in LUMS and what's happening here in the US. So it's for people talk about transitioning and settling while going abroad, but for me, coming from a master's program from US and into a program at LUMS, this too was a very simple transition. I didn't feel too much of a difference. So I think in terms of faculty, in terms of the program, there's not much of a difference. It is pretty much modeled on that, and it works brilliantly. This is what I felt in terms of the program. Zabardast. Very good. So let me come back to Aqsa. Aqsa, अगर एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा था. So currently you are at Stanford. अगर मैं आपसे ये पूछूं कि if you go back in time and at your time at LUMS, and what was the thing which you enjoyed the most while at LUMS? यानी कि क्या एक चीज थी जो सबसे ज्यादा आप एंजॉय करती थी LUMS के अंदर, या जिसको आप अभी भी मिस करती हो? मे बी I think I miss the friendship a lot. Yeah, I miss my friends. I miss my peers. I think that was something I might never have in the future. Because the period when we were doing PhD, it was really like PhD
can change people a lot in ways that we never expect. And that whole process is kind of draining. It takes a toll on your mental health as well, and you have to have a support system along with your advisors' support and guidance. You need to have a support system back at home and with your friends as well. So I think I had a very good support system. My family was very supportive. My friends were they were incredible, and they were very supportive. And I think I kind of missed that. Um, and they were there at every stage whenever I was down, because they are in research. There are lots of time when you have to get from scratch. You spend days working on one project, on one thing, and then in the end you discover that whatever you have been working on is not feasible, and you have to start from scratch once again. And that kind of takes some toll on your mental health. You have to have that courage to get started again and again. And I think that apart from my advisor's support, I needed help from my friends as well to keep me motivated and keep working towards the goal. And that is kind of missing here. So So I think I don't even sorry. go ahead. Sorry, please go ahead. I'm sorry. So I think SSC की शायद यूनिक बात ये है जो शायद कहीं पर भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल सारे एक ही बिल्डिंग में. I'm sure you must have friends from various departments in one building. Yeah, so this I think that it's not just my friends. I would also like to point out the open door policy of the faculty members. It was not like we had to make an appointment and then go and see and ask the question. I think Wasim pointed it out before. We could just go into any like whenever I needed advice. I used to go to the faculty members, not just the people who were on the committee of my PhD committee, but also other people. Like I also used to seek सॉरी advice आपको यहाँ पे from. इंटरप्ट कर रहा हूँ. आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा. Sorry. यहाँ पर अभी आप भी बात कर रही थी और वसीम भी कर रही थी कि इतनी रिसर्च इंटेंसिव है, तो कभी प्रोफेसर्स ने आपको मना नहीं किया जाओ मेरे पास टाइम नहीं है अभी, आई डोंट वांट टू मीट यू? क्या कल्चर है यहाँ पर? ऐसा कभी भी नहीं हुआ. I mean, मेरे साथ तो एटलीस्ट नहीं हुआ. I have spent 7 years at LUMS. But I was never turned down. I was never told to go away and come later, because I have knocked at the doors of several people several times, and I was never told to go away. I had very good relation with people working in the CS department. वहाँ पे डॉक्टर नवीद अर्शद थे, उनके साथ भी बहुत अच्छा था. डबल ई का तो कोई कंपैरिजन नहीं है. वहां से तो था ही, लोग सपोर्ट करते थे. They knew me, they were there for me. I hope ये मुझे आप पुश करने के लिए नहीं कह रही. लेकिन बाकी डिपार्टमेंट से भी ऐसा था कि they were there for me. डॉक्टर सबी से भी बात होती थी, और CS डिपार्टमेंट एनर्जी इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट्स थे वो they were even after I graduated with my PhD, there was a transition period before I joined Stanford. I worked in the CS department, so I had very good collaboration with the people who were there. So it's EE is not just a department on its own. It offers interdisciplinary research, it's a very good thing to have several people from diverse background working on solving one problem. So yeah. Great, thank you. So Wasim, मैं अब आपके पास आता हूँ. I want to know from you कि अभी जो हमारे PhD एप्लीकेंट्स हैं सोच रहे होंगे अप्लाई करने के लिए, उनको क्या एडवाइस देंगे एट दिस स्टेज जब वो एप्लीकेशन सबमिट कर रही हैं? व्हाट दे शुड बी थिंकिंग? क्या वो फैकल्टी को अभी रीच करें? मे बी अभी एप्लीकेशंस गई भी नहीं है. व्हाट वुड बी द ओवरऑल एडवाइस यू वुड गिव टू द स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग? Wasim is, I think, no, Wasim is there. Oh, okay. Wait a second. Let me make him. Okay. Wasim, now you should be able to speak.
जी, आप म्यूट हैं, आपने मेरा, आप म्यूट हैं वसीम। Sorry, can you repeat your question? जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप जो इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे होंगे लम्स के अंदर, उनको क्या एडवाइस देंगे फॉर क्या वो इस वक्त भी फैकल्टी को रीच आउट करें एंड शो देयर इंटरेस्ट दैट दे आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद देम, या ओवरऑल व्हाट वुड बी द एडवाइस टू देम एट दिस स्टेज? बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि बेस्ट अप्रोच तो यही है कि वो पहले से अप्रोच करें फैकल्टी मेंबर्स को। जैसे अक्सर ने भी मेंशन किया और मैंने भी बात की कि हमारी फैकल्टी रीचेबल है, इजीली एक्सेसिबल है, और इट्स ऑलवेज गुड कि हम पहले से जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो मैं जब मास्टर में ही सेकेंड ईयर का स्टार्ट था तभी मेरा फाइनल हो चुका था। मैं अब PhD करूंगा, और मैं पहले से इवन क्योंकि अगर पहले से आप बात करेंगे तो जो सुपरवाइजर जो आपको लेना चाहता है उसको भी कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा ये स्टूडेंट है, ये इंटरेस्टेड है और ये काम करना चाहता है, तो उसे कॉन्फिडेंस होगा कि ये स्टूडेंट जो है ये काम कर लेगा जो हम प्लान कर रहे हैं। तो इस इम्पोर्टेंट भी है, बल्कि ना सिर्फ लम्स में, अगर दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं तो और सुपरवाइजर के लिए डिसीजन लेना भी उससे आसान हो जाता है अगर पहले से आप इन कन्वर्सेशन हो विद योर पोटेंशियल सुपरवाइजर। ये ठीक है, थैंक यू वसीम। अच्छा, जवेरिया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि लम्स के अंदर वी नो द प्रोग्राम इज फुली फंडेड एंड देयर इज अ गारंटीड स्टाइपेंड ऑफ आई थिंक 60,000 रुपीज एट दिस स्टेज, लेकिन क्या लम्स के अंदर इससे ज्यादा भी स्टाइपेंड मिल सकता है आप लोगों को? आर देयर मोर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज? बिकॉज ऑब्वियसली अगर कोई मैरिड है लोग, वो सोच रहे होंगे मे बी दीज आर नॉट इनफ एक्सपेंसेस, क्या टीचिंग असिस्टेंटशिप्स भी अवेलेबल हैं? कुड यू कमेंट ओवर दैट, योर एक्सपीरियंस हियर एट लम्स? यस सर, एक तो सुपरवाइजर सर, एक तो लम्स की फंडिंग है, यानी स्कूल की फंडिंग से कहते हैं, एंड अदर देन दैट सुपरवाइजर की फंडिंग होती है। आई मीन आप सॉर्ट ऑफ आरएशिप कर रहे होते हैं विद सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर भी आपको फंड कर सकता है जितना हो जाए। एंड अपार्ट ऑफ दैट टीएशिप्स भी आप कर सकते हैं। टू टीएशिप्स मैंडेटरी है लम्स में इन विद इन पीएचडी, और अदर देन दैट भी आप कर सकते हैं तो वो अगर करना टीएशिप चाहते जो है हैं। वो फाइनेंशियल गेन्स के लिए, कि उसका कोई एक्सपीरियंस या टीचिंग के ऊपर उससे सर ऑफ क्या उसकी कोर्स वो अगर साइकोलॉजी इफ क्या है यू उसकी? यस सर, अगर आप एकेडेमिया में जाना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, और फाइनेंशियल गेन के लिए आप अदर देन दैट टू टीएशिप आप कर सकते हैं। वो टू टीएशिप्स जो है वो मैंडेटरी हैं यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स कि आपको एक्सपीरियंस होगा अगर आपने टीचिंग करनी है, और वही प्रेजेंटेशन स्किल्स और सारा कुछ दैट, और वो इम्प्रूव होती हैं। अच्छा, सालार, मुझे पता है आप बड़ा जबरदस्त शौक से फुटबॉल खेलते हैं एंड यू आर ए फुटबॉलर। सो मुझे बताएं, यहाँ की लम्स की इस वक्त करंट हाउ इज द कैंपस लाइफ? यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे पढ़ने के और रिसर्च के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं? कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं जो लम्स के अंदर? अगर यहाँ का कोई जिम वगैरह है, कोई एनीथिंग, व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटीज वी हैव हियर एट लम्स जो शायद आप इस्तेमाल करते हो? Yes, sir, after a very intensive day of research, we do need to cool off some steam. And for that, LUMS is one of the best places. You get access to a lot of things. There's a state-of-the-art gymnasium. A lot of people like to go to the gym. There's brilliant equipment over there. You have table tennis tables, badmintons, basketball, indoor basketball court. You have a swimming pool, which is also a brilliant swimming pool in terms of the swimming pools in the city. Then you have a cricket ground available to you. There's a lot of a bunch of coaches, and there's a cricket team, a proper cricket team. There's football, which is something I love to play under floodlights here at LUMS. So brilliant football facility there as well. And then there's also rugby team.
So LUMS has a lot of different sports teams that you could be part of, and you could be, using them to cool off some steam while you are working very hard here at LUMS. And then other than these sports facilities, we have other societies as well that you could be part of. So you could be part of maybe a debates society. You could be part of maybe Model United Nations Society. So there are different societies as well that are there to assist you or enhance your personal learning curve as well. So you get access to a bunch of these things so that you could basically improve upon yourself and get a better life at LUMS other than just the academics. So do you have to pay for these facilities, or they are part of your whole PhD package here? No, this is absolutely free. This is part of your PhD package. So इतनी If you- सारी facilities free LUMS के अंदर, डे केयर LUMS के अंदर, sports LUMS के अंदर, यहाँ तो पूरी की पूरी एक community लगता है LUMS के अंदर बनी हुई, and you can, once you get in, you have access to variety of things at LUMS. Yeah, this is something that resonates very strongly with me too, and based on what Aksar Javeria and Wasim also talked about, and this is also something that separates LUMS from other schools also. That at the end of the day, we are all humans, right? We are conducting research, we are doing PhD, or we've done PhD. At the end of the day, we are humans. The fact that LUMS has created this as a community to give you an assurance that you are being cared for, you are being looked after, your needs are being catered for. As long as LUMS is looking into that, I think this is one assurance, one guarantee, one comfort that every student or a potential student might want to know, that LUMS is looking after you. It does look into these aspects. It reaches out to you regarding these opportunities that are available to you, and you could access them, and they are free of cost. As long as, look, since you're a PhD student, you get access to all of these things. You don't have to pay an additional amount or anything of the sort. It gives you a subscription to a community that is there to help you grow. So in a nutshell, LUMS offers an experience which is unparalleled. It's not the same with any other university. It gives you an experience. It gives you a sense of belonging, that you belong here. They own you and give you these opportunities where you can then excel and enhance your learning curve and develop into professionals. Okay, Zabardast. Thank you, Salar, for this. So maybe as a reminder, जो participants हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, so they can ask question via chat. And let me actually now go into final round kind of thing. So maybe Aksa, कुछ आपकी कुछ something you want to share with the prospective applicants, कुछ आप मजीद कहना चाहें before we wrap this discussion? Anything you have in your mind? So I would like to say two things based on what Salar said. It just came to my mind. A very respectable person at LUMS once said to me that you could be a part of a very great institution, but you could amount to nothing if you're not participating in these extracurricular activities, or if you're not making use of the best of your time. So that's very important. It didn't feel like that it didn't feel like a very sound advice at that time, because I was on the receiving end. But now it makes kind of real sense that you have to absorb all these things. You have to utilize all these opportunities that are being given to you in order to be fully learn from these experiences that LUMS has to offer. And LUMS has to offer a lot of things. Like, you just need to be on the receiving end of these experiences. And secondly, I would like to another thing that I would like to say to the prospective students is that they need to ask themselves what kind of a person they are hoping to become after their PhD, and what do they want to get out of their PhD. And knowing answers to these questions is very important, because since this experience can change you in ways you do not expect, you need to be in control of the narrative. Do you want to become someone who adopts ethical practices in research and gives credit where it's due? Or do you have the tendency to become someone who takes credit for the work that you have not done? So these are the questions that need to be answered before you join the PhD. And there's no shortcut. You have to take the long way. There are no shortcuts in life. The sooner we realize this, the easier things will get in the future.
And I would wrap up by saying that staying in academia is not the only choice that we have after PhD. I don't know why LUMS has not highlighted this in their admission flyers, but I think that a lot of people are already working on real world problems at LUMS and in SS, not just in SSC. They have interdisciplinary research going on, and they are working on real world problems that can create a difference in the community. They need to highlight that. Okay. And yeah, so you need to have, We this is will, a request to all of the faculty members we at, will, at inshallah. I will pass and these comments. yeah, and the fact is that if the students get a chance to work on real world problems, and if they get to address even a small percentage of these issues that we have in our country, then they can launch their own products. They can be entrepreneurs. They could have a startups. And as far as I know, LUMS is also has this like it offers resources to people who are interested in starting their own startups. And it's a very common thing in the US. Every PhD researcher, like most of them, they tend to go and they tend to, after their PhD, they tend to have their own startups. They bring their research to the market. Since they're working on real world problems, they're working on addressing the issues that people are facing in their community. So LUMS is already doing that, but it's just that PhDs do not know. Pakistan is producing so many PhDs, a handful of PhDs every year, but they find themselves at a loss when it comes to utilizing their research for practical purposes. So they need to understand, they need to sit down and think about what are the things that they need to work on and how they can improve and bring benefits to the people of Pakistan. And for that, they need to reach out to not just to faculty members, but also people in the industry and in the corporate sector and sit together and try to bring solutions, because our future is in their hands. Because we might have failed in the past, but they can bring a change in the future. Zabardast. Great. That's So all. maybe in a nutshell, I can say that yes, Pakistan has a lot of challenges, and as a PhD student, you can find solutions for those challenges to contribute Yep. to Pakistan economy and the overall outlook. Thank you, Yep. Aksa. So coming back to Wasim, so your final thoughts, you want to say a few final words before? There are some couple of hands. I will take the questions in the end, but let me go through the panel first. So Wasim, your final comments, anything you want to say? So I think while, okay, let me make it closed. Ji Wasim, now you should be able to speak. Yeah. I would like to continue discussion on the practicality of our research. तो अगर मैं इस जो अक्सा बात कर रही थी उससे मजीद 2-4 सेंटेंस ऐड करूंगा पहले कि जैसा कि मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मैंने जो काम LUMS में किया है तो यहाँ पे वाटर क्वालिटी मार्केट है और उनको प्रॉब्लम ये आ रहा है कि यूजर्स की पार्टिसिपेशन बहुत कम है यहाँ पे वाटर क्वालिटी मार्केट्स के अंदर, वाटर क्वालिटी ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर। तो जो जिस प्रॉब्लम पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली बात ही है कि हम इस पार्टिसिपेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कौन सी पॉलिसी इंटरवेंशन की जाए हम यूजर की तो मैंने जो LUMS में एक्चुअल में रिसर्च किया है, तो इसका आंसर उस सारी रिसर्च के अंदर है पहले। तो मैं स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूंगा और कि अपने जो जिन भी प्रॉब्लम्स के ऊपर वो काम So मेरा ख्याल है वसीम करें। जी। So maybe while Wasim
gets its internet back. Let me go back to Javeria. Javeria, आपकी final thoughts. Would you want to say a few things before we wrap this session up? Yes, sir. So जो prospective students हैं, I would like to advise them कि first ask yourself that you are motivated enough to start a PhD because it's a full-time commitment. Or there are many ups and downs in motivation level, but you have to be determined. And also कि आपने जो है अपना try to avoid procrastination और throughout your journey. और ये कि अपना जो coursework है or qualifying exam, try to wrap up in first year and a half. और उसके बाद आप कोशिश करें कि अपने रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट करें या ड्यूरिंग दिस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं समर्स में और इस तरह से और ट्राई टू डू क्वालिटी रिसर्च दैट इज बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड एंड फॉर पाकिस्तान. Thank you, Javeria. So Salat, up your final comments before I take questions now. After you. Yes, I'll just elaborate on the same. My message to the prospective students is ज़्यादा नहीं सोचो, don't think too much. Just come on board. LUMS is waiting to groom you, to help you grow, and it is pretty much there looking for potential candidates that are there who can take the flag forward. LUMS is the best place for your growth as long as you are in Pakistan. So this is then based on the world-class faculty and the researches that they do, and also the facilities that LUMS offers you. I forgot to mention about the library. LUMS also has one of the best libraries out there. And one of the recent incidents actually, quite yesterday, was I had a book that I wanted the library to issue to me, and they did not have it. This was a recent book, but and to my amazement, the library staff went out and actually purchased this book. It took them a few weeks, but they made sure that the book was available, and then they sent me an email that, look, we have your book available with us now. Please come and get it. This kind of summarizes the LUMS spirit too. And this is the same with the faculty. You reach out to anybody, you reach out to any faculty member with any problem at all. You know there are people out there who are there to care for you and listen to you and address your problem. So it's a very and like you said, this is more like a community, and LUMS is waiting for you to join this community. जबरदस्त. सो इसका मतलब ये है कि जैसे वो इंजीनियर्स होते हैं, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, सो मे बी लम्स भी आप लोगों के साथ इंजीनियर बन जाते हैं. अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो तो दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर यू. सो जबरदस्त. सो थैंक यू. ऑल्सो लेट मी टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस. और सबसे पहले मैं ये iPhone guest है, मे बी प्लीज फ्रेम योर क्वेश्चंस briefly, like 30 seconds, not more than that, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद. सो आई एम गोना आस्क iPhone, जिनका आईफोन के नाम से हुए हैं वो. अस्सलाम वालेकुम सर. जी अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा नाम आतिफ है और मैं करंटली मास्टर स्टूडेंट हूँ दालियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना में. एंड मैं PhD परस्यू करना चाह रहा था और मैंने सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर के साथ कॉन्टेक्ट किया था और रोबोटिक्स फील्ड के लिए. बट मेरा क्वेश्चन एडमिशन और रिलेटेड है. जैसा कि मैं अभी चाइना में हूँ करंटली और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में हमें होगा. सो I'm not sure मुझे आपका सही सवाल समझ आया कि नहीं. हाँ, लेकिन if I understand correctly, you are saying that you are a student from China and you are applying to LUMS, so admission requirements के ऊपर आप कुछ पूछ रहे हैं, correct? I think that's what you are saying. So जी, कुछ पैनलिस्ट में अंदर इसको जवाब देना चाहे तो I would welcome one of you to answer this question. So okay, so basically बेटा एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम या इनफैक्ट SSC के अंदर एक जो ओवरऑल डायनेमिक्स हैं, यहाँ पर हम थोड़े से नॉन ट्रेडिशनल सेंस में है कि ये नहीं है कि आपकी डिग्री अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही है तभी आपका दाखला होगा. You can come up with any science degree as long as you clear your test. You can be part of this program. बाकी बहुत सारी डिटेल्स जो एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की हैं वो अवेलेबल हैं वेबसाइट के ऊपर. So you can look over those details. अगर कोई doubts हो तो you can send an email to admission office. They are very responsive. Or you can send an email to a faculty member.
they also may be able to help. So I think एक और question ले लेते हैं, मेरा ख्याल ये अब्दुल रहमान तारिक साहब थे, he wanted to ask a question. जी तारिक, जी वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम अब्दुल रहमान तारिक है। मैंने एनएफसी मुल्तान से ही इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और मास्टर मेरा यूआईटी लाहौर से है। मिस जुवेरिया ने मुझे पढ़ाया है, मैं इनका स्टूडेंट हूँ। ओके 2009 बैच में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और आईसीज इन्होंने हमें पढ़ाया था। और अनफॉर्चुनेट एक वाकया भी इनके उसमें हुआ था, इन्हें शायद याद आ गया होगा। सेकंड, मेरे एक दो क्वेश्चन हैं, मैं जल्दी से बोल देता हूँ, आप काइंडली उसका। एक तो ये है, मेरे कुछ वो हैं दोस्त वगैरह जो इंटरेस्टेड हैं, उनके बिहाफ पे भी मैं कर रहा हूँ और अपने बिहाफ पे भी कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने कोर्स वर्क के साथ मास्टर किया हुआ है। उनकी रिसर्च नहीं है ड्यू टू जॉब या किसी भी इशू की वजह से, ठीक हो गया, तो वो मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं या नहीं? क्योंकि उनका कोर्स वर्क का रिसर्च नहीं है, और रिसर्च प्रोजेक्ट किया था जो भी एक आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। दूसरा जो एक एचईसी की तरफ से वे है मास्टर के लिए। सेकंड, मैंने पूछना था कि जो हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है या आउट ऑफ यूनिवर्सिटी उन्हें हॉस्टल लेना पड़ेगा? तीसरा, जो सबसे अहम क्वेश्चन है, जो अनफॉर्चुनेट है ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखा जाए, कि जो पीएचडी कर रहे होते हैं वो हमें ये कह रहे होते हैं कि जी आप प्रोफेसर टाइम नहीं देते, आप जाएंगे तो एक मरतबा, दो मरतबा, तीन, तब वो, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त वगैरह पीएचडी कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री से, चाइना से, आयरलैंड से, इटली से, तो वहां पर तो सिस्टम और है। लेकिन पाकिस्तान में जो कर रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो ये कहते हैं कि प्रोफेसर टाइम बहुत कम देते हैं और वो डांटते ज्यादा हैं, ये है वो है, ठीक है, अपना मुझे इसके आपका तरह। क्वेश्चन मिल गए। सो पहले दो क्वेश्चन के सवाल का जवाब मैं देता हूँ वेरी क्विकली, और फिर उसके बाद हम सालार से भी पूछ लेते हैं और अक्सा से भी दोबारा पूछ लेते हैं। शी जस्ट मेंशन ऑल दीज थिंग्स। सो पहली बात ये है कि आपका अगर मास्टर्स कोर्स वर्क के साथ है, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर पीएचडी प्रोग्राम, नोबडी इज स्टॉपिंग यू। डेफिनेटली रिसर्च हेल्प्स, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। इफ योर स्किल्स आर गुड एंड यू हैव ए गुड मैच विद द फैकल्टी सुपरवाइजर, यू कैन बी एडमिटेड एंड इफ यू क्लियर द टेस्ट। और दूसरा आपका सवाल था हॉस्टल, डेफिनेटली हॉस्टल यहाँ पर जो पीएचडी में आएगा उसको हॉस्टल ऑन कैंपस मिलेगा, जबरदस्त हॉस्टल मौजूद है। कैफेटेरिया बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट है यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स लम्स के अंदर बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो उसमें कोई चैलेंज नहीं है। सलार, तीसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था कि हम आपको डांटते तो नहीं है अगर आप हमारे पास आते हैं, हम आपसे मिलते हैं कि नहीं मिलते आप लोगों से? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल लम्स में ये कल्चर नहीं है। लम्स में कल्चर अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। फैकल्टी, तमाम फैकल्टी, और किसी एक, मैं अपने एडवाइजर की बात नहीं कर रहा, तमाम फैकल्टी ऐसे ही है कि आप उनसे जाएं, यू कैन वॉक इन टू देयर डोर। अगर वो मसरूफ होंगे वो आपको बता देंगे, लेकिन दे विल ऑलवेज एंटरटेन यू, ऑलवेज गिव यू टाइम, और वो आपकी प्रॉब्लम को सही से सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर से टाल दिया। दे विल लिसन टू यू, आपकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, दे विल गिव यू टाइम, दे विल एड्रेस योर कंसर्न। तो ये लम्स का एक बहुत खूबसूरत कल्चर है जो लम्स को मुनफरिद करता है बाकी यूनिवर्सिटीज या बाकी कल्चर्स से। तो ये एक बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए तो मैं फिर नहीं कहता, लेकिन लम्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शायद तमाम फैकल्टी आपको सुनने के लिए तैयार है, इसमें कोई मसले की बात नहीं। So I know अक्सा आप इस पे कुछ कह चुकी हैं ऑलरेडी, बट मे बी इन ए मिनट इफ यू वांट टू से फ्यू मोर वर्ड्स, शायद उन तक मैसेज पहुंचा नहीं था सही, एंड देन वी विल wrap the session up. Yep. So I don't want to undermine the efforts or the problems the other people are having with their advisors, but sometimes it happens that we are more likely to pin our failures on our supervisors. अगर मैं अपने सुपरवाइजर की बात करूं, पीएचडी सुपरवाइजर की, तो मेरा शुरू में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था उनके। इट बिकेम रॉकी इन द मिडल, और उसका रीजन मैं ही थी, क्योंकि आई वाज नॉट एन आइडियल स्टूडेंट। आई एम रियली, if I could go back in time, I would change a lot of things, the way I handled a lot of things. वो तो हम So सारे ही I चाहते हैं was, बैक इन टाइम में जाके बहुत सारी yeah. चीजें बदले। So it's not, it's like that when we are living through that experience, we don't realize things that are happening. We try to pin our failures onto others. So मेरे एडवाइजर बहुत सारी चीजें मुझे एडवाइस करते थे उस टाइम पे, जो कि मुझे इस वक्त समझ नहीं आती थी। अब मैं इस स्टेज पे आ गई हूँ, अब मुझे उनकी बातें याद आती हैं, उनकी बात, उन बाकी इंस्ट्रक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स की बातें याद आती हैं। सो आई रियली फील लाइक कि वो उस टाइम पे शायद समझनी इतनी नहीं, ग्रिल डाउन इतनी स्टिक नहीं करती थी, बट over the course of time, when you think back and think back to your experiences, you get to learn that they are there to help you. They are not your enemies. They are there to help you. They are there to guide you. But you have to come out of your comfort zone. You have to ask them for help.
वो आपको मदद तब देंगे अगर आप खुद भी कुछ एफर्ट करोगे. PhD is not about just asking and seeking guidance. You need to make an effort on yourself as well. So वहाँ पे कलेक्टिव एफर्ट होती है. आपकी अकेले यही नहीं कि एक स्टूडेंट सिर्फ रिलाई कर रहा है अपने सुपरवाइजर पे कि वो बताएगा तो मैं करूंगा, या वो कहेगा तो जो कहेगा मैं वो करूंगा. ऐसा नहीं होता. तो दोनों तरफ से ओपन कम्युनिकेशन भी होना चाहिए. So जबरदस्त. yeah, तो that's it. जबरदस्त. लम्स में ऐसा कोई मसला नहीं है. वैसे लम्स में जो है इंस्ट्रक्टर्स, दे आर देयर टू हेल्प यू, दे आर देयर टू गाइड यू. तो ऐसा कोई इशू नहीं है लम्स में. चलो नहीं, जबरदस्त. सो आई थिंक हमें बड़ा, मुझे तो बहुत मजा आया आप लोग के साथ गुफ्तगू करने का. आई विश कि हम और लंबी गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप लोग कभी साथ होंगे तो विल हैव ए 1-to-1 कन्वर्सेशन. सो मे बी एक आखिरी चीज मैं इकबाल का एक शेर पढ़ूंगा जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, एंड आई थिंक वी विल स्टॉप देयर. कि वो इकबाल का एक शेर है ना, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे हैं जो डालते हैं कमान. जो मेरे जो एप्लीकेंट्स हैं वो सितारों पे कमंदे डालने की कोशिश करें, एंड इंशाल्लाह LUMS is there to provide you all the support to pursue your moonshots. So thank you very much, Dr. Aksa. It was really wonderful to have you. मुझे पता है आपके रात के 12 बज रहे हैं. So really grateful to you for joining us. Wasim, thank you very much, Dr. Wasim. आपके रात के 2 बज रहे हैं, and it's really grateful that you joined us. और जवेरिया, आप अपना घर बार छोड़ के आई हैं on weekend. Thank you for this conversation. और सलार, I'm sure आप अपनी फुटबॉल को शायद मिस कर रहे होंगे इस टाइम के ऊपर, वीकेंड है, but again thank you for joining us. So thank you जी, and we're gonna stop it.